Okay, good evening everyone. So let's begin our next class which is our legal dictations. आज ये डिक्टेशन सिर्फ 110 वर्ड्स पर मिनट पर लाइव होगा. इसके अलावा आपके आईडी पे फीमेल वॉइस में ऑलरेडी सेम डिक्टेशंस 90 वर्ड पर मिनट के स्पीड पर अपलोड कर दिया है. ओके, इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए कि हाउ इज द क्लास सो दैट आई कैन स्टार्ट. ऑडियो नॉइज ऑडियो एंड एवरीथिंग इज क्लियर. ये DRAT पर मैटर आज हम करने वाले हैं. DRAT पर मैटर. ओके चलो. इस पर पहले भी हमने पिछले बार भी मैटर थोड़ा सा किया हुआ था. एंड प्रोग्रेसिव मैगजीन का ये मैटर है. सो यू गेट कंप्लीट आउटलाइंस हर एक वर्ड की, प्लस एडवांस आउटलाइंस भी मिलती है आपको. सो मेक श्योर दैट यू टेक द डिक्टेशन वेल. ओके चलिए. स्किल टेस्ट इज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन कीबोर्ड. ठीक है, टाइपराइटर वाला जमाना गया. कौन से जमाने में जी रहे हो आप? क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. लेट अस बिगिन गाइस. 110 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 seconds. प्लीज बी रेडी. Steno School legal matter at 110 words per minute. 3, 2, 1 start. It is urged upon by the High Court. Sorry, एक second. Let me start again. शुरुआत में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है. Steno School legal dictation at 110 words per minute. 3, 2, 1 start. It is urged by him that the High Court has fallen into error by opining that there was no justification to exercise jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India, whereas the facts stated warranted deletion of such an observation by the DRAT, as a tribunal has no settlement between the borrower and auction purchaser had been arrived at. Learned counsel would submit that the DRAT had really not addressed to any issue, and after recording a settlement in a most brief manner, recorded the observations which really deserved to be quashed by the High Court. It is further canvassed by the counsel that the High Court should have taken note of the fact that the order passed by the DRAT had already been compiled with, and it was absolutely unnecessary to drag the bank to a further litigation which is contrary to the spirit of act and the purpose of recovery of debts due to Banks and Financial Institutions Act 1993. It is also contended that the DRAT failed to take note of the prayer made by the appellant therein, and for no important reason the matter was kept pending for more than 4.5 years. The learned counsel appearing for the respondent number 1 contended that he had paid the dues of the bank within the time fixed by the DRAT, and thereafter he had also transferred the property in favor of a third party due to financial difficulties. In essence, submission of learned counsel is that putting the clock back is likely to cause serious loss to him. The learned counsel appearing for the auction purchaser submitted that on the basis of the liberty he had already filed a suit in the Delhi High Court and is entitled to pursue the remedy. Cause of action was taken in hot haste in by the bank in putting the property into auction,
without indicating that litigation was going on between the borrower and the bank. It is urged by him had said the fact was made known, the third respondent would not have participated in the auction. It is urged by him that his claim for damages cannot be nullified the decision of the High Court. Before we dwell upon the jurisdiction of the DRAT to give such a liberty to the auction purchaser, we think that it is absolutely imperative in the case at hand to take note of the fact that through the appeal was filed before the DRAT and admitted, yet the same was disposed of almost after 4.5 years. We are at pains to say that the DRAT has totally forgotten the obligation cast on it under the RDB Act and also has remained quite oblivious of the salient features and the main purpose of the Act. In this context, we may fruitfully refer to the objects and reasons of the Act. The relevant part of it reads: the financial sector has been one of the key drivers in India's efforts to achieve success in rapidly developing its economy, while the banking industry in India is progressively complying with international prudential norms and accounting practices. There are certain areas in which the banking and financial sector do not have a level playing field as compared to other participants in the financial markets in the world. There is no legal provision for facilitating securitization of financial assets of banks and financial institutions. Further, unlike international banks, the banks and financial institutions in India do not have power to take possession of securities and sell them. Our existing legal framework relating to commercial transactions has not kept peace with the changing commercial practices and financial sector reforms. This has resulted in slow pace of recovery of defaulting loans and mounting low levels of non-performing assets of banks and financial institutions. Narsimham Committee 1 and 2, constituted by the central government for the purpose of examining banking sector reforms, have considered the need for changes in the legal system in respect of these areas. In another case, referring to the statement of objects and reasons, this court dealt with the submission that existing rights of private parties under a contract cannot be interfered with, more particularly putting one party in an advantageous position over the other. In that context, the three judge bench observed, as discussed earlier as well, it may be observed that though the transaction may have the character of private contract, yet the question of great importance behind such transaction as a whole, having far-reaching effect on the economy of the country, cannot be ignored. Purely restricting it to the individual transactions, more particularly when financing is through banks and institutions utilizing the money for the people in general, namely the depositors in the bank, and public money at the disposal of the financial institutions. Full stop. ऑल राइट, तो ये था आपका 115 वर्ड्स, ठीक है, 115 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर ये डिक्टेशन बोला गया आप लोगों के लिए.
एक्सरसाइज नंबर 23 है, प्रोग्रेसिव मैगजीन जो हम लीगल की कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से हर एक आउटलाइन आपको दी गई है। मेक श्योर कि आप इनको आउटलाइंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, जहाँ भी डाउट है उसको दोबारा प्रैक्टिस करें, एंड एडवांस आउटलाइन जितनी बनाएंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्या पूछे सर, स्पीड नहीं आ रहा है अभी? स्पीड नहीं आ रहा है तो फिर स्पीड पे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करो आप। शुरुआत में स्पीड नहीं आएगी, एक्यूरेसी कम होगी, लेकिन व्हेन यू गेट यूज टू टेकिंग डिक्टेशन एट हाई स्पीड ना, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट भी आना स्टार्ट होता है। आप लोग प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ एक साथ अचीव करना चाहते हो। आप चाहते हो कि स्पीड भी आ जाए, एक्यूरेसी भी आ जाए, और मैं टाइपिंग भी एकदम फटाफट करूँ, हर एक आउटलाइन भी एडवांस बना दूँ, और फिर आप एकदम सर पे हाथ रख के बैठ जाते हो कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे, बिकॉज इतने सारे गोल्स एक साथ चेज करोगे तो कैसे काम चलेगा। वन थिंग एट अ टाइम, जस्ट फोकस वन थिंग एट अ टाइम, एंड फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ा इशू क्या है। वॉट यू कैन डू इज यू कैन लॉग इन टू द एग्जाम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको डेमो वहाँ पे मिल जाएगा, लीगल डिक्टेशंस मिल जाएंगे, प्लस आपको जनरल केसी डिक्टेशंस, बहुत सारे डिक्टेशन मिलेंगे। जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन योर केस लीगल मैटर ओपन करो, वहाँ पे डिक्टेशन लिखो। डिक्टेशन लिखने के बाद में मैटर को सबमिट करो। यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, टाइपिंग का प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, या शॉर्ट हैंड आउटलाइंस, लाइक यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर टेकिंग वन सिंगल डेमो। ओके, तो ये काम करो, देन यू विल अंडरस्टैंड, एंड देन आप समझ सकते हो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज क्लास। 90 के स्पीड पे मैटर आप सभी के स्टूडेंट्स के आईडी पे, जिसके भी एक्टिव है आईडी, आपके आईडी पे डिक्टेशन अपलोड हो गए हैं। चाहो तो आप पहले 90 का लिख लो जाकर, एंड उसके बाद में 110 में 5 मिनट अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास। मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। बाहर निकलते निकलते जैसे मंदिर में घंटी बजाते हो, उसी तरह से लाइक दबा के जाना, और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच क्लासेस, and we'll be meeting again very soon. Bye bye everyone, good night, take care.